So today our class will be three and app.js, and now I just simply write our JavaScript code src and app.js. Okay, so today I will be discuss about loops, array, and uh, object and functions. Actually objects and functions are too much bigger, but something about I am talking about object and functions, because object and functions is bigger, bigger not it is a biggest topic of every programming language. For that particular reason, I just something say about object and functions maybe, but today our main topic will be loops and array. Okay, so um, now um, now I am first we are look about loops. So we have generally three type of loops we are actually created when we are using our any programming language, mostly C, C++, Java, and JavaScript. So everywhere three type of loops can be used or apply in our application, and C sharp also both same. So actually we have three type of syntax pattern we already have. So when we are create any kind of loops, so that time this is the syntax which are actually help us to create a loop. While, okay, so while means when conditions is true, only that time that while can be create a loop to generate our data. And after that we can use another syntax called do while, and then we can use another thing is uh, while, do while, and for. These three kind of loops mostly we are using when we are using any kind of software development languages mostly. So we are created these three type of loops pattern, and most of the time we are using these three time. And after that, uh, in for loop have some variations, like for in and for op, and also for each. This kind of syntaxes are differentiate with the for loop. So this is the advanced loops which are introduced after for. And while and do while are both same, but if you are working with the Python programming language, so that time do while loops not available into the Python programming language, but otherwise any other programming language you can see do while loops. So how it work, all these type of loops, how it work? So first we are start about while loop. So how can do that? First we are initiate any variable uh, which called initial. This is called initial value. Initial value. Initial value. Okay, so this is called initial value first, and after that we can use while the syntax. And when we are using any kind of syntax in the programming language,
सो इफ आई अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ कोई सॉरी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो कोई ओके नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके कंटिन्यू नो प्रॉब्लम okay so here we are when we are writing any programming code and mostly syntaxes so that syntaxes in JavaScript mostly are small character and small case of syntaxes are mostly uses so while is a syntax and after using this syntax we can use some conditions here like if I use condition I less than 10 means where is the arrow sign are pointed that value always be should be lower than actual value so this arrow sign pointed to I that means when I value less than 10 then it will be true okay so now it will be true and after that we can see the output if we want to see the output so if we want to see output so for that particular purpose we can use console.log means it can be give our output into the developer console in the browser and as well as if we are run it in node command line so we also can be visible that output so here we can use a label maybe here we can use label and after that we can use the value also here but if I write only this kind of things and after that if I save here and I if we run it in the browser so after that time this browser continuously loaded and nothing it responds after some time because this particular coding have error because logic is true but this logic cannot be ended at this moment because it's always be true right it is always be true because this time nothing is changed zero always be true when it's showing level 0 but for this particular purpose our program should be run and run and run and never ending process because it's not be incremented or decremented whatever if it is decremented so it's never be ended but if it incremented the value then we can see then one of the in one point we can end the loop okay we can ending the loop so now आप क्या कर सकते हैं तो अभी now we can use I equal to I plus 1 I plus 1 I plus 1 equal to means if I value is 0 plus 1 means here we can see the value 1 and after that here check the value 1 is less than 10 or not if less than 10 then here can be value will be display and as like that it comes up to 10 we can see the value so what can be output if we want to see the output should be maybe 2 how much value what how much values we can get from here कितना वैल्यू हम लोगों को ऐसे मिल सकता है
here value is starting from the 0 and we can get it up to 10, but not 10, up to 10 means less than 10 value can be print here. That means we can get the value level 9. Up to level 9 we can be see the value. Okay, let's see output. Okay. And after that we can see the output. So it start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and when it is 10 and 10 not less than 10, so for that particular purpose it is the conditions not be satisfied and it will be false. And So it means वो चेकिंग करता है आई जब आई लेस देन 10 हो वो प्रिंट करता है उधर आउटपुट बता आई एक लेस देन 10 है, दो लेस देन 10 है, तीन लेस देन 10 है. हाँ, okay. basically thing is when we are writing any kind of codes here any kind of code, here is the conditions and these conditions is very crucial. These conditions can be checked this value and this is the required value, this is the produce value, it is a producer value, it is a produce right now, and it is a ultimate goal. So when it is produced and when we are see the goal, so goal always bigger than produce value, then we can get the output. Means यहाँ पे जब तक वैल्यू छोटा होगा तब तक हम लोगों को आउटपुट मिलता रहेगा. ओके, एंड it is 1 by 1 increment. So that means I plus 1 means एक के बाद एक हम लोग यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं. तो अगर हम लोगों को इसको एक लाइन पे करना है, मतलब ये जो सेम चीज़ है इसको अगर एक लाइन पे करना है तो I प्लस प्लस कैन डू इट. ओके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं. सो दिस इज दिस कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर. INCREMENT increment operator. Increment operator increment operator and actually increment operator is plus plus. So if we are increment 1 by 1, so this is the actual value and we can see it like this. Okay, so this is the increment operator. Also we can create another way this same same conditions with this way. This is also same. Okay, so this is also same. Oh, okay. So I plus plus and I plus equal 1 is Same. same thing in दोनों. Yes. काम करते हैं. Okay. ये तीनों ही सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली actual normal programming we can understand it, but if we are optimize this code, then we can be use this particular thing. If we want to more advanced and optimize, then we can use it. It is called addition assignment operator. It is a additional and it is the assignment. So additional assignment operator or plus assignment operator. So it's actually can be jump. Actually, if we are using this particular operator, we cannot jump. We cannot jump. Basically, thing is, if we want to see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up to 9 we can see all the values. But if we want to see first we want to see 0 and after that we can see the value 2 and after that 4. So we want to jump two values
actually we jump one values, and if we want to do so that time we can create like this. मतलब हम लोगों को अगर बीच में एक नंबर को स्किप करना है या उसको जंप करना है तब जाके हम लोग इस तरीके से कोड कर सकते हैं. एंड इफ वी डिड सो देन वी कैन सी द आउटपुट 0 2 sorry not 2 3 and 6 9. ओके सो यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 by 1 नहीं हो रहा है, 2 by 2 हो रहा है. ओके हाँ 2 by 2 मतलब 2 जंप कर रहे हैं हम लोग. ठीक. ओके बट ये पॉसिबल हो रहा है. ओके सॉरी this also be jumped another number. So now we can see the output 0 2 0 2 4 6 8 and 9 not be printable because after that we get 10 value there. ठीक. Okay. आप समझ लिया. Okay so but we cannot do this same with this particular code. It is not possible because it is always incremented only one value, 0 1 2 Okay. 3 4 5 6 7 8 9. It is only one value. But if we want to same like this, so that time we can optimize also, and we want to also jump to jump one more than one, so that time we can be use like this also. ठीक है समझ लिया. ओके तो ये है बेसिकली प्लस असाइनमेंट या एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं, जो हम लोगों को काफ़ी यूजेबल ऑपरेटर है. प्लस ठीक है. प्लस असाइनमेंट. ओके ठीक है. and not only plus assignment, if you want to minus use, so it's called subtract assignment. If you try it multiply, so multiply assignment. It's if you are using this subtract, not subtract, it is divide assignment. And also you can use like this, it's called modulus assignment. Modulus assignment. Okay. Can you say why modulus sign we are using? Module usage का मतलब परसेंटेज है. परसेंटेज है. ठीक क्यों हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ये वैल्यू यूज़ करते हैं लॉग, अगर ये करते हैं what we can get output, what type of output we can get after this, result क्या होगा? इसका आउटपुट 6.2 और 6.2 नहीं आएगा, मे बी नहीं आएगा. हाँ 6.5 because that's is half, means 6.6 and after that point value when it is added, then we can add one more 0 and then 5 divided by 10, 6.5. So this is the 6.5 is actual value. But if we want to see only integer value, how can see that? If we want to see only integer value, how can see that? Just we are use parse int, and after that we can see only 6 from the output. Okay. So इसका मतलब है कि इसका राउंड करता है. राउंड अप कर दिया. बेसिकली प्रॉब्लम थिंग इज
राउंड अप बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हुआ कि जो वैल्यू निकला था उसको हम लोग दो तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। एक है पार्स फ्लोट एंड पार्स इंट। ये दो फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट के पास, जिसमें फ्लोट अगर यूज़ करते हैं तो पॉइंट वैल्यू दिखता है। इफ़ वी आर सी इट, सो देन वी कैन from value we can see here. But if we want to see it as only integer, means without point value, so that time we can use parse int, and then we cannot see the point value here. Okay. Exactly. But if we want to round up, so we already have another options that's called math package, and we can want to sell, so then we can see it as 7. इसको राउंड अप करता है। It says 7, and if we want to round up in lower version, in lower, then we have another function which is floor, and we can see it 6. Okay, so this is the math package, and after that we can see the math functions with the constructor object. Okay, so this is the actual mathematical operators which we can be see here. But if we want to see the modulus, so after using this modulus we can see output as 1. At this moment we can see 1 because क्यों? हम लोग 6 से बड़ा को डिवाइड किया तो क्या पड़ा रहा 1, रेस्ट ऑफ द डिवाइडेड वैल्यू. Oh, ठीक है. So it's dividing 13 by 2, then the remaining, it shows only the remaining. इसका मतलब है कि उसको remaining को show करता है. ओनली रिमेनिंग को शो करता है. तो इस रिमेनिंग को यूज़ करके हम लोग लीप ईयर को निकल सकते हैं. इफ़ वी आर using the functions, so that time we can be use how can we use the remaining value to check our year is leap year or not. Also we can see so many things using this modulus sign, like odd even, so many things, prime number, so many things we can be use when we are using modulus sign. modulus sign very effective sign है, और इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता है जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं. इफ़ वी आर यूजिंग दिस, दैट टाइम वी कैन नॉट सी एनीथिंग एनी अदर वैल्यू हियर. बट इफ़ वी आर using this, that time we can see 1. So very easily we can understand this value is odd or even. ठीक. What can be logic applied here? If this modulus equal 1, that means odd. Is not, then even. इसका क्या लॉजिक बन सकता है ऑड इवन का? इफ this equal 1, then log odd number, else Even number. even number. Just you can check here the var a equal to, you can use any kind of value. So after that we can see the output of a or b. So even number, and if we are
use it as 13, then we can see the output odd number, right? Very effective and easiest way to check out our odd even number with this modular sign, right? Right, ठीक. अगर ये मॉडुलर साइन अगर नहीं होता हम लोगों के पास तो हम लोगों को ये ऑड इवन निकल ही नहीं पाते. ओके, सो ये जो लूप हम लोग चलाए, जो लूप मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इस लूप का और एक तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं. क्या? Here we are using incremental operator for ground to up, मतलब 0 to 10 तक जब हम लोगों को चेकअप करना पड़ा तब हम लोग इस लूप को यूज़ किया. लेकिन अगर बोला जाए कि i का जो वैल्यू है वो 20 है और हम लोगों को 10 तक दिखाना है, तो उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे? 10 तक जाएगा, उसको दिखाएगा, कैसे कर पाएगा? What we can do here? इसका मतलब ये कि इनिशियल वैल्यू बड़ा है और चेकिंग करना है छोटा से. तो कंडीशंस क्या होगा? कंडीशन I less than 20. If I greater than 10. If I greater than 10 मतलब I जब तक 10 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा. और इंक्रीमेंट तब क्या होगा? हम लोग को यहाँ पे डिक्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा. डिक्रीमेंट, हाँ, I माइनस डिक्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट बड़ा से छोटा तक आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द लॉजिक. व्हेन इनिशियल वैल्यू इज बिगर देन actual value, then we can be use reverse options like this way. Okay, so 20 is bigger, so arrow should be changed. I greater than 10, then we can see the output, and also we can use decrement operator for this particular operations. Minus. Okay, and it is same. And if you want to check it, let I less than equal this, also same output we can see here. And after that, if we are if we want to 2-step jump, means 1-step jumps, so we can do that with this syntax. Okay, you understood? ओके, ठीक है, आप समझ गया. ओके, तो ऐसे हम लोग रिवर्स थिंग हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं. अभी we are already know about the loops, while loop, mostly incremental, with incremental operations and decremental operations. And now we understand about do while loop. Do while loop is the same thing when we are working this same way we can be use. तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग पहले कंडीशंस डाला है, ठीक है ना. उसके बाद आई मतलब बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो पहले डाल दिया था. आफ्टर दैट we just simply use do, and when we are return the value, then we can check, when we are finish our job, then we are checking the value. So that means
we can see, we can do our task, and when we are uh, exit exist exit exit from the process, that time we can see the condition, we check the conditions. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग बाहर में निकल रहे हैं तो उसी टाइम पे ये चेकिंग हो रहा है, अंदर में जाने के टाइम पे चेकिंग नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे as per logic we can see everything, but if we are want to check it like this, so क्या होगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा? लेस देन 0 नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, सच में? क्योंकि I लेस देन 0 है, इसके लिए नहीं चलेगा. नहीं चलेगा क्योंकि चलेगा या नहीं चलेगा? I लेस देन 0 है. नहीं चलेगा. चलेगा. वाई? बिकॉज मैंने बोला था जब यहाँ पे घुस रहा है तब यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो रहा है. ओके, जब निकलने जा रहा है तब चेकिंग होगा, तब अटक गया, निकलने नहीं दिया, इसको कहीं पे साइड कर दिया, लेकिन घूमना हो गया है. बेसिकली क्या है, आप मेट्रो पे चढ़ रहे हो, मेट्रो पे चढ़ने के टाइम पे आप टिकट पंच करके मेट्रो पे चढ़ रहे हो, लेकिन कहीं पे ऐसा हुआ कि आपको चढ़ने के टाइम पे टिकट नहीं चेकिंग किया जा रहा है, निकलने के टाइम पे टिकट चेकिंग हुआ है, तब क्या होगा? आप तो जहाँ पे जाना था जा चुके हो, बट निकलने के टाइम पे अटक गए. ओके, एक बार कोलकाता में ऐसा हुआ था मेरे साथ. बट मैंने निकल गया था. एक किस्सा है, हिंदी में बताओ? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार क्या हुआ था, कोलकाता में मेट्रो है, ठीक है, ये कोलकाता में मेट्रो इंडिया में पहली मेट्रो है, मतलब पूरी इंडिया में पहली मेट्रो कोलकाता का ही है. और मेरे काम के लिए मुझे एक टाइम पे काफ़ी मेट्रो में आना जाना का मतलब आते जाते रहते थे उस टाइम पे. तो क्या होता था, मेट्रो में जो चेकिंग वाला जो गेट रहता था ना, टिकट चेकिंग, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग वाला गेट रहता है, ठीक है, मेट्रो में. ठीक है. तो उसमें क्या होता था, पेपर टिकट दिया जाता था और उसमें अलग अलग रेट्स रहता था. और वो जो रेट था, पहले वो रेट था उस टाइम पे 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़ ऐसे करके था, ठीक है, मतलब बहुत पहले का मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो बहुत पुराना हो चुका है. तो पहले उस तरह का रेट हुआ करता था, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 8 रुपीज़ ऐसे करके स्लैब था. तो हम लोग क्या करते थे, एक टाइम पे पता चल गया था कि बहुत सारे गेटों के अंदर मतलब टिकट चेक प्रॉपर्ली नहीं होता था. तो इसलिए क्या करते थे, मेट्रो कंपनी वाले कुछ कुछ गेट को ऐसे ही ओपन रख दिया था, जिसमें टिकट चेकिंग प्रॉपर्ली नहीं होता था. वो रिवॉल्व जो करता था गेट ओपन करने के लिए, मतलब खींच के हम लोग मतलब निकल जाते थे, लेकिन बेसिकली वो लॉक नहीं रहता था कि टिकट चेक पास होगा तब जाके वो खुलेगा, ऐसा नहीं होता था. तो उस तरीके से हम लोग निकल सकते थे. एक बार क्या हुआ था, उस टाइम पे हम लोगों के पास 2 तरीके का टिकट होता था, एक स्मार्ट कार्ड होता था और दूसरा पेपर टिकट. तो मेरा स्मार्ट कार्ड भी था और कभी कभी पेपर टिकट भी रखते थे. तो स्मार्ट कार्ड में मेरा पैसा पहले ही ख़त्म हो गया था, तो और मैंने पेपर टिकट भी नहीं लिया था.
या लिया था पता नहीं है, बट बेसिकली क्या हुआ था, मैंने 4 रुपीज़ का टिकट काट के मैं 8 रुपीज़ का जर्नी कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ठीक है। अचानक से एक दिन मैंने जब लौटा अपने जिस जगह पे मुझे लौटना था उस में लौटे, तो देखा कि अचानक से चेकिंग लग गया, पूरा ओ, चेकिंग लग गया, पूरा चारों तरफ से पूरा घेर लिया पुलिस ने, टिकट चेकर्स ने पूरा घेर लिया। और वो उतरने के टाइम पे देखा कि मतलब पूरा और बहुत सारे लोग मेरे जैसा काम करते भी थे, तो बहुत सारे लोगों ने, वो तो पूरा कॉन्फ्यूज्ड लटक गया, मतलब दबज रहा है पुलिस ने इसको मतलब सब चेकिंग हो जा रहा है, जिसके पास टिकट नहीं है वो केओस में आके इधर उधर से भागने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर से भागने की कोशिश कर रहा है, उसको जल्दी जल्दी पकड़ ले रहा है पुलिस और चेकर्स ने। मैंने क्या किया, मेरे भी तो वही हालत है सेम। मैंने बिल्कुल शांत रखा मेरे दिमाग को, और क्या हुआ था, मैंने एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कोलकाता में अगर आप कभी विज़िट करोगे तो पता चलेगा, दमदम जो स्टेशन है उसमें क्या होता है, मेट्रो जो ट्रेन है वो ऊपर में रहता है, और जो रनिंग जो एस्कलेटर एस्कलेटर जिसको बोलते हैं, उससे मैं उतर रहे थे। तो उस टाइम पे वो सारा चीज़ सीनरी ऑलरेडी मैंने देख चुका था, तो मैंने बिल्कुल शांत दिमाग में मैंने सोचा जो होगा होगा, देखा जाएगा, अभी उसको लेकर इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं सिंपली जो स्मार्ट कार्ड वाला जो गेट होता था उसमें मैंने सट गया लाइन में, और धीरे धीरे करके मैं अपना जो स्मार्ट कार्ड है उसको मतलब टच करके मैं निकल गया। उस दिन हुआ क्या था, मतलब एक्चुअली मोस्ट ऑफ द गेट्स खुला ही हुआ था शायद, ठीक है, बट लोगों ने उतना सारा चेकिंग की वजह से और बहुत सारे टिकट चेकिंग की वजह से क्या हुआ था, उन लोग पैनिक में आके बहुत सारे लोग इधर उधर कूदने लगा था। तो जो लोग डर के वजह से कूदा वो लोग पकड़ में आ गया, मैं थोड़ा सा दिमाग शांत रखा तो मैं निकल गया। एक्चुअली क्या होता था, उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ते थे, पैसे कम होता था तो जितना पैसे बचा सके। तो यहाँ पे ये है ये लूप। बेसिकली क्या हुआ रहा था, पहले घुसने के टाइम पे चेक हो रहा था, अभी निकलने के टाइम पे चेक हो रहा है। तो ये तो जो जहाँ पे घूमना था वो घूम लिए, बट निकलने के टाइम पे अटक गया। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अगर 20 भी करता हूँ तो क्या होगा, क्या हुआ, 20 भी निकल आया, लेकिन लॉजिक क्या सही चला? नहीं चला। व्हाट विल बी लॉजिक? हाँ, लॉजिक आई लेस देन जीरो है। आई लेस देन जीरो तो है ही, क्या करना चाहिए इसके था, लिए नहीं चलेगा। क्या करना चाहिए था ये? आई ग्रेटर देन जीरो। देन नाउ चलेगा। चलेगा, लेकिन क्या होगा इसका रिजल्ट? रिजल्ट 1 से 20। कितना चल रहा है? रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होते जा रहा है। ब्राउज़र मेरा हैंग हो चुका है। विंडोज सिस्टम होगा तो क्रैश ही कर जाएगा। क्योंकि बेसिकली इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली सिस्टम क्रैश कर जाता है लूप की वजह से। पहले ऐसा होता भी था कि अगर आप का कोई
सॉफ्टवेयर में किसी तरह का लॉजिकल ग्लिच आ चुका है तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। ओके सो एंड इसके बाद मतलब ये है कि क्रैश क्यों करता है, क्योंकि क्योंकि अगर आई किसी भी तरह का एरर आ जाए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा जनरेट होने लगा, तब जाके सिस्टम क्रैश करता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है तो बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू तो नीचे जा तो नहीं रहा है, ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब तक ऊपर में रहेगा तब तक ये चलते रहेगा। तो वैल्यू वैसे ही ऊपर में है, उसके बाद फिर से भी ऊपर में जा रहा है, मतलब वैल्यू जनरेट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। और यहाँ पे वैल्यू वैसे ही दिखते जा रहा था। तो बेसिकली क्या है, सीपीयू जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू को प्रोसेस करते जा रहा है, माइक्रो सेकेंड्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करते जा रहा है। तो एक टाइम पे जाके क्या होगा, मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा ना, जितनी बार यहाँ पे वैल्यू जनरेट होगा। बेसिकली ठीक है। बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनी वैल्यूज, सो एवरी वैल्यूज शुड हैव मेमोरी, टेक्स्ट सम मेमोरी, एवरी वैल्यूज टेक्स्ट सम या मेमोरी। सो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट होगा उतना मेमोरी ऑक्यूपाइड होते जाएगा। एक टाइम पे जाके क्या होगा, रैम के अंदर जितनी भी मेमोरी अवेलेबल होगा वो सारा ब्लॉक कर जाएगा। तो ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, वैसे चलते चलते एक टाइम पे वो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल ठीक। इसीलिए क्या होता है, ये जो ऐसे ही प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो हम लोग इसको एरर हैंडल में भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस तरह का कोई एरर आ गया, तो हम लोग इसको एरर हैंडलिंग करते, वो बाद में जाकर हम लोग देखेंगे। बट एट दिस मोमेंट we should understood the problem, what about the loops problem, because this kind of loops problem आप बिगिनर जब हो कर सकते हो। तो इसलिए मैंने जो प्रॉब्लम है वो मैंने शुरू में दिखा दिया। इस तरह का लॉजिकल प्रॉब्लम मत करना, ऑलवेज यू लुक्स दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर किसी भी तरीके से आप ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हो तो उसका डायरेक्ट यूजेस माइनस माइनस डिक्रीजमेंट से होगा। अगर यहाँ पे लेस देन यूज़ कर रहे हो उसका आउटपुट प्लस प्लस से होगा। जस्ट ये पहला चीज़ है, दिमाग पे रखना। आई थिंक ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड रिमूव द प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है। तो यही चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, जब होगा ग्रेटर देन तब होगा माइनस माइनस, जब होगा लेस देन तब होगा प्लस प्लस। ओके ठीक है। नहीं तो नहीं तो लूप गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। So if I want to check the if it's something is if I want to find out the first if something is true or not, I have to use the do while loop. But if I want to check the exit time at the end, then I can use the while loop इस्तेमाल से। हाँ। क्या बोल रहे हो आप? इसके मतलब ये कि कब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल क्या है, वो डू वाइल लूप और वाइल लूप कहीं पे भी, वाइल लूप हो, कहीं डुआइल पे। लूप हो, फॉर लूप हो, वॉट एवर, अगर कंडीशन चेकिंग में अगर आपको ग्रेटर देन दिखे तो उसका नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा उसमें ग्रेटर देन के टाइम पे डिक्रीमेंट होगा, लेस देन के जगह पे इंक्रीमेंट होगा। जस्ट यही लॉजिक मैंने बताया। लूप कोई भी हो, वाइल हो, डू वाइल हो, फॉर हो, वॉट एवर, जस्ट लॉजिक मैंने बताया कि बेसिकली लॉजिक नहीं, ये एक्चुअली एक हैक है।
प्रोग्रामिंग हैक. ठीक. आफ्टर दैट जब हम लोग फॉर लूप यूज़ करते व्हेन वी आर यूजिंग फॉर लूप, सो दैट टाइम we are using these three things in a one line. I less than 10, first part is a initializer, second part is conditions checking, and third part is increment or decrement. Okay, and then we can see the output like this. Okay, so basically thing is, if we are using the for loop, so यहाँ पे जो सेमीकोलन है, दिस सेमीकोलन ब्रेकिंग द पार्ट. ओके, तो पहली पार्ट में हम लोगों को दिखेगा वैल्यू इनिशियलाइजर, सेकेंड पार्ट में कंडीशंस, थर्ड पार्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, ठीक है. so we can see output as expected, and if we are using value 20, and then we should applying minus minus sign here, otherwise we are getting error. Okay, this time it's not coming, now it's coming. Okay, जब बड़ा से छोटे में जाना है तब greater than, if we are using, then definitely we are using minus minus. If we are using less than, then plus plus. This is the thing which need to be follow every time. Okay, ठीक है. ओके. ये हो गया तीनों टाइप का लूप. उसके बाद बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा चीज़ें आ सकता है. अभी दिस 3 टाइप का लूप ऑलरेडी चल चुका है. अभी लूप्स इस 3, ये जो 3 लूप है, दिस 3 लूप्स आर ऑलरेडी वी आर अंडरस्टैंडिंग. बट व्हाट अबाउट फॉर इन, फॉर ऑफ एंड फॉर ईच? सो फॉर इन, फॉर ऑफ and for each, it's related with array, mostly array. Okay, basically every type of loops can be used with array, but most of the time when we are actually creating with using array or data, so most of the times we are using for loop, and after that we can use for in, for of, for each. How can we manage that? So basically thing is, here we can use some students name here. Okay, so here we can be use some students name. Can you send me some names? Hafiz. We can do Arjun. Okay, then Kumar. And you can write Ahmad. okay. So these 4 names we can be used as student. Okay, so this is our student's name, and we say, and we can be say hi Hafiz, hi Arjun, hi Kumar, hi Ahmed. So we can use these 4 names through loops. Okay, so how can do that? So if we are using previous known loops, if we already know which are loops here, so at this moment we can use also if we are using the while loop, so that time we can be use initializer first, then we can be use while, 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 and then we can use I less than students dot length, because this is the array and it is also array when data is initialized, and after that when data is initialized we can get some methods with the array object. Okay, and this is the length
is the property, means how many datas is available here. Okay, and after that we can see the output from this section, and after that we can use hi plus student stu students with I. Could you understand this? ها समझ लिया. It's what the student.length, it's going the length of all the students from Hafiz to Ahmad, all of them. It will print then we say print, it will print all of them with word hi. Okay, but here is problem is we are not given any increment operator. यहाँ पे जब तक इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाएगा तो हमेशा हाफिज ही आ जाएगा, अहमद तक नहीं आएगा. तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, कोड में हैंग हो जा रहा था ब्राउज़र. ओके, सो हाय हाफिज, हाय अर्जुन, हाय कुमार, हाय अहमद आ रहा था. मतलब बेसिकली क्या हुआ था, ये अगर नहीं लगा रहे थे तो यहाँ पे हाफिज़ में ही अटक रहा था. तो यहाँ पे हाफिज़ काफ़ी सारा प्रिंट हो रहा है, बट हामिद तक अहमद तक नहीं आ रहा है. ठीक है. Okay, so when we are using the increment operator, then we can see output. So basically क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल जो लेंथ है, यहाँ पे टोटल लेंथ 4 होगा, और ये स्टार्ट हमेशा 0 से होता है. मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 में है, उसके बाद ये 1 में है, ये 2 में है, और ये 3 में है. 4 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये टोटल 4 लेंथ का है, लेकिन स्टार्ट हमेशा 0 से होता है. 0 से होता है. तो ये बेसिकली स्टूडेंट का निकलने का तरीका है. इसका दूसरा मतलब उल्टा कर देगा तो डू व्हाइल हो जाएगा. इसको उल्टा कर देगा तो डू व्हाइल में भी सेम आउटपुट निकल जाएगा. लेकिन यहाँ पे ओनली प्लस प्लस ही काम होगा, माइनस में कभी काम नहीं होने वाला. हाँ, माइनस में हो सकता है अगर रिवर्स करना है तो यहाँ पे लेंथ सेट करना होगा, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं. देन वी कैन यूज इट लाइक दिस, अहमद टू हाफिज, then we can be use that. But here have problem because जब यहाँ पे लेंथ 4 है वो बेसिकली अनडिफाइंड होगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू है नहीं लेंथ 4 में. तो इसको हमेशा -1 करके इसको सेट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे अहमद आ रहा है. और यहाँ पे 0 भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा -1, तब जाके यहाँ पे पूरा डेटा दिखेगा. This -1 equal to null. Sometimes in programming we can say -1 means null. Okay, so basically if we want to create it reverse way, then we can be assign it as a with the -1, and we can check it with the -1 also. But it is not a good practice, so we just check simple way or simple things. So then we can use it from the start, and then we can see it as like this length. Okay, most of the times we are using like this. Understood? Yeah, समझ लिया. तो इसको ही जब हम लोग
फॉर लूप में करेंगे. सो सेम थिंग, var I equal to 0 0 and I less I than less than students students dot dot length length, and then I I plus plus plus. plus, and now we can see the Uh, output with this only. Okay, and now we can see the output. Sorry, why we are not seeing the value properly? Is we refresh the page maybe. refresh not possible at this moment, because maybe sometimes it hang, page was hanged before. So now it's working. Okay. So Okay. यहाँ पे जब फॉर लूप हम लोग यूज़ किए तो start from 0 and after that we can see the total value of length, and we can see it up to 4. But it is a normal loop which are actually we can use, but we already have some or functions like for in. I actually say var I in student students, and then we can see, actually we can see the value like this. Means this is the point which are actually getting, and this point almost same. Okay, just I extra added the name here, Shivaji, and we can see the extra here. Could you understand? No, like for var I and students. तो इसके मतलब है कि ये for loop के same thing है, कोई different नहीं है ये. So it's same thing like for loop. फॉर लूप जैसा ही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे तीनों जगह पे हम लोग को सेटअप करना पड़ा था. पहले इनिशियलाइजर सेटअप करना पड़ रहा था, उसके बाद लेंथ को चेकअप करना पड़ रहा था, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ रहा था. बट इन जनरल क्या बोला मैंने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ही ज़्यादातर काम होता है, मतलब जीरो से लेकर जितना तक डेटा हो. तो ऐसे ही बेसिकली ज़्यादातर काम होता है. तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भार मतलब बेसिकली यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो पहले यहाँ से इस लूप से निकल ले रहा है. मतलब बेसिकली इंडेक्स वैल्यू क्या है वो पहले निकल लो. ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो स्टूडेंट जो वैल्यू है, जो इंडेक्स वैल्यू है, उसको यहाँ पे असाइन करके सारा डेटा निकल गया है. ठीक है. तो इसी तरीके से हम लोगों को जो वैल्यू है एक स्टूडेंट्स का, मतलब वो हम लोगों को बहुत जल्दी हम लोग को मिल जा रहा है इन से. मतलब इस इन बेसिकली क्या निकल रहा है, नंबर्स को, मतलब की वैल्यू को निकल रहा है. यहाँ पे दो तरीके से वैल्यू होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है. तो यहाँ पे जो की है उसी को निकल के यहाँ पे दे रहा है. ठीक है, इंडेक्स दे रहा है बेसिकली. यहाँ पे आई मतलब इंडेक्स. ओके, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे रहा है, जिसको यूज़ करके हम लोग अपना स्टूडेंट्स वाला जो नेम है वो निकल पा रहे. यह है फॉर इन लूप, इसको बोलते हैं फॉर इन लूप. नाम लिख देता हूँ, नहीं तो गंडगोल प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये फॉर इन लूप, नॉर्मली वो फॉर लूप पहले था, तो यहाँ पे फॉर इन लूप. बट अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ फॉर ऑफ लूप से. फॉर ऑफ लूप यूज़ करेंगे. फॉर var student student of students students, and now we can print it here just like this.
और भी सिंपल, आउटपुट सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक स्टूडेंट्स का डेटा मिल रहा है, यहाँ से जब तक स्टूडेंट्स का डेटा मिल रहा है तब तक वो डेटा को प्रिंट करते जा रहा है फॉर ऑफ से। आसान है चीज़। ये दोनों एक चीज है ना? नहीं, दोनों एक चीज, फॉर दोनों एक चीज़ नहीं है। फॉर इन से इंडेक्स निकलता है, फॉर ऑफ से ऑब्जेक्ट निकलता है। जब इन यूज़ किया जाता है तब इंडेक्स निकलता है, जब ऑप यूज़ करते हैं तब वैल्यू निकलता है। इन से आई मतलब इन से इंडेक्स, और ऑफ से ऑब्जेक्ट या वैल्यू, एक एक वैल्यू मिलता है। ठीक है। ठीक है। इसको और भी आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली काम पे लगाएंगे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जान पाएंगे। ये हुआ फॉर ऑफ, और फाइनली है फॉर ईच। फॉर ईच एक्चुअली कोई अलग से लूप नहीं होता है, ये एक्चुअली स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, STUD, स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ही बहुत सारा फंक्शंस यहाँ पे दिखाई जाता है। उसमें एक फंक्शन है फॉर ईच, जो बेसिकली इस तरीके से डेटा हम लोग का आउटपुट में देता है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जस्ट ये एक फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर से ये डेटा निकल के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट डेटा आ रहा है और उसी स्टूडेंट डेटा को यहाँ पे निकल के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फॉर ईच, सो इसका मतलब है कि इसका भी मतलब for निकल के each, कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर फॉर ईच बेसिकली ये एक फंक्शन है, ये एरे का एक फंक्शन है। फंक्शन। एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर से दूसरा एक फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पे आउटपुट निकल ले जा रहा है। इसके बारे में ये सिंटैक्स जो है देख कर रखिए, बट इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताएगा क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो सकता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इसको सिर्फ मैं एक चीज़ ही बोल सकता हूँ कि ये एक फंक्शन है और इसके अंदर में जो एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है, इस फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन या कॉलबैक फंक्शन। तो ये एनोनिमस और कॉलबैक फंक्शंस के थ्रू यहाँ पे डेटा को मिल रहा है, लेकिन इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में मैं बाद में बताएगा। ठीक। तो अभी हम लोग सारे जो भी एरे और लूप्स के बारे में जो भी बात करना था वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ओके, बट अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें या फंक्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कोड रख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप्स, एरे, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, इस चारों चीज़ को एक साथ में यूज़ करेंगे। ओके, हेलो। ओके, या सो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट में बहुत अलग अलग टाइप में ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर हम लोग डिफाइन करता हो तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट किस तरीके से हो सकता है? इफ़ वी आर यूजिंग दिस कर्ली ब्रेस, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑब्जेक्ट नोट, इट इज़ ए ऑब्जेक्ट नोटेशंस। इसको एरे भी बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली ये एरे तरह से भी काम कर सकता है, क्योंकि जब हम लोग एरे यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एरे ऑब्जेक्ट
बेसिकली एरे का दो टाइप का एरे होता है, एक होता है इंडेक्स एरे और एक होता है एसोसिएटिव एरे। तो जावास्क्रिप्ट में एरे को एरे में बोला नहीं जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो भी सिंटैक्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेटा टाइप्स अगर चेक करते हैं, जो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में हम लोग चेकअप किए थे, तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट किया मतलब दिखाया था। इसको एरे नहीं बोलता है जावास्क्रिप्ट जब हम लोग टाइप चेक करते हैं। क्यों? बेसिकली इसलिए जब हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटा हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे पहले नेम, यहाँ पे नेम डिफाइन किया जाता है, तो हाफिज़। उसके बाद लोकेशन कहाँ पे है? कैलिफोर्निया और यूएसए। यूएसए ही है। एंड अगर एज देखा जाए तो क्या होगा? 30। Yeah, 30. ओके, तो यह है एक स्टूडेंट का डिटेल्स, ये है एक स्टूडेंट का डिटेल्स। सो अभी इसी स्टूडेंट्स का डिटेल्स को अगर चेकअप करना है या प्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं? लॉग में नेम इक्वल टू स्टूडेंट डॉट नेम, बिकॉज जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है वो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है इसको एज ए प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। स्टूडेंट डॉट LOC प्लस एज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट एज। Age. Okay, so we are get all the outputs as per object data. Okay, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना जिसमें हम लोग कर्ली ब्रेस यूज़ किया, बट मैंने बोला कि इसको एज ए एरे भी हम लोग डिपेंड कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने we can copy from here this line, and after that we can use it as a array also. How? When we are present the array की value, so this time क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब भी हम लोग array का की चेक कर रहे थे इस टाइम पे I यूज़ कर रहे थे, right? Right. I means number 0 1 2 3 4, right? We are using numbers to see the data value, right? Right. So now we can use it as a key with name. So this square bracket actually give us output from value of student name, and it's called associative array. So this time it's also treated as a associative array where we have some predefined index here. We already have predefined index, so this is a index and it is a value. It is a index, it is a value. It is a index, it is a value. Okay, Okay. and we get the output same. But why we are taking? I didn't understand one thing. So why we are taking students inside a bracket with a string? So can you do without the string, or it should be on the string? क्यों हम लोग ये इसको एज ए स्ट्रिंग यूज़ किया? That's the problem. It is a problem or it is a solution? No, that's what I'm asking. Like, why it's on string?
because most of the time we use without a string, right? In the other places, like, yeah, that's I don't understand. Schemas. यहाँ पे एक Schema कॉन्स्टेंस that. यूज़ कर रहा हूँ, गेट मी SSIG मैसेज, ओके, Okay. OBJ and index we are passing from here. Okay, so Okay. I just want to see get some outputs from object. Okay, so we just use simple index as here, and after that we want to see the object value. Could you understand? क्या मैं शो करना चाह रहा हूँ? जैसे ही यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भेज रहा हूँ स्टूडेंट को, और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे नेम दिखाओ. Okay, sorry. When I'm using here name like this, okay, actually problem क्या था, यहाँ पे इंडेक्स हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे जो इंडेक्स जो यूज़ कर रहे हैं, ये इंडेक्स होगा स्ट्रिंग, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग में डेटा पास करेंगे, तभी जाके यहाँ पे नेम निकल आएगा. मतलब दिस मैसेज कैन कैरी द वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐसे डॉट नहीं यूज़ करके वैल्यू नहीं निकल सकते थे. So if you use without the name without and without the string, it doesn't work. Yeah, if you use like the name Actually, or location. we don't use like this value. We can't use directly like this. Okay, because when we are get the object value data from the JavaScript, so that time we can present the object value directly. That time we can be used like this. But if we want to see the value, object value dynamically, so that time we can be used like this way. Oh, so so what I understand is it's there are two ways to show the value to get the output from an object. Two way. The first way is student.name, where we get the value of the name, and the second way is student array, the string and name. It's not an array. It's not an array. It's called square bracket. Square bracket. Square bracket. Okay. It's a square bracket, and after that we can use the index of the key or value. Okay. So there are two ways. The first way is student.name. The second way is with the bracket. We can Get the value. show the output in two ways.
correct? This is the two way we can be check the value when we are using object. Okay, Okay. it is the output of the object and function. So my alignment is correct. How I explain all the thing. क्या Yeah. मेरा सिखाने का जो तरीका है क्या वो समझ आ रहा है? हाँ समझ आ जा रहा है, हाँ ठीक है। मतलब सही तरीके से तो चल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप? हाँ हाँ ठीक है। क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट है या इजी लग रहा है? It's good, yeah. क्योंकि जब आप So there are two ways. क्योंकि जब तक आप There's ट्यूटोरियल फॉलो करोगे या कुछ भी चीज़ देखोगे उतना समझ नहीं आएगा जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ। वो ठीक है यार। क्या आसान लग रहा है या हार्ड? नहीं आसान है, कोई मुश्किल नहीं। हाँ क्योंकि को रिलेटेड है और अंडरस्टैंडेबल है, हाँ क्योंकि एक के साथ दूसरा को रिलेट कर रहा है और उसको अंडरस्टैंडिंग वे में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हाँ मैंने ये चारों चीज़ों का मैंने बोला था कि एक के बाद एक मैंने बताएगा। पहले लूप्स, उसके बाद एरे, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस. Okay, and things are represent like that way also. Okay, so I also send it here. Object and function for this, and now I use all of them in single code. Okay, so how can do that? Now persons, just I am using first array like this. Okay, and after that I just simply using another object name Shivaji, location India, and age 38. Name is Hafiz, location is USA, is 30. Okay, these two persons data we have, right? yeah. So we use array or Storing object in the array we have two object here. This is a array and in between them we have two objects. so I didn't understand. Like inside the array we can use objects. We can use array in the array. We can use array also in between another array. We can also do that if we are using some name like this. We can also do that. We can also do that, but it is not too much acceptable. So this kind of things we can be used. That means actually you have any understanding about database? Database, no. Oh, No. oh, I could understand because you are you have no programming experience. So for that purpose, you did not have any database experience. Database means you have any Excel sheet knowledge, Excel knowledge. Excel, no, I just know a little bit, yeah, not much.
If we are open any Excel sheet, if we are using any Excel sheet, so this is our sample Excel sheet like this. It is a column, right? Yes, yes. It is a column, and number 1 2 3 4 5 6 22, it is a Row. row. Okay, so basically thing is every row means array. So this is a every row is a array. Okay, and every data is a column. Understood? Yeah. So this is a structure of database. This table, if we are place the value, so we can place the name here, location here, and we can place age here, and after that we can be saved all the values in this section. And after Okay. that, if we want to see all the values in our database, and if we want to present from the database, so we can get all the value from the database like this way. Okay, this is the value from the database we are getting from here. And after that, we want to present all the value in our uh, output. So at this moment, we just use a loops. So like we are using the for op loops. Basically it will be very simplest way to see our data. So for op, get a call. Just hold on. Okay. হ্যাঁ বলো। হুম। আচ্ছা। হুম। আচ্ছা, আজকে রাতে বসবে নাকি? আজকে রাতেই তো টাইম দেওয়া হয়েছিল। তো আজকে রাতেই বসো। হুম 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 হুম। হ্যালো। Yeah. Okay, so person. Oh, sorry. What about PRSON person op? Hello, hello, hello. Yeah, yeah, I can hear you. Hmm. Persons, and then we can see the output. What can, what type of output we can be use here? Like we can see the output of this. We can use we can see the output like this. Okay, and now we can see the output from here for two data and two outputs like this. Hmm. Okay,
So it is the process to see our data. So basically thing is, यहाँ पे पर्सन्स का डेटा हम लोगों को मिल रहा है और उसी पर्सन्स का डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ओके, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर पा रहे. बट अगर हम लोगों को यहाँ पे इसको पूरी तरीके से डिकोड करना है, क्योंकि यहाँ पे नेम है, लोकेशन है, व्हाटएवर, इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर पा रहे हैं ईजिली. बट यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन गेट डिटेल्स. सो यहाँ पे एक ऑप्शंस, एक लूप में यहाँ पे यूज़ करूँगा जहाँ पे स्टूडेंट का डेटा आएगा, मतलब डेटाज यहाँ पे आएगा जो एरे वैल्यू होगा, उसको हम लोग दिखाना चाहेंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर var डेटा ऑफ डेटाज आ चुका है. जब हम लोगों को डेटा का जो वैल्यू है वो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से दिखा सकते हैं. ओके, डेटा में डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं. ओके, तो कैसे दिखाएगा, ये काम कैसे करेगा, गेट डिटेल्स एंड just we are use the person's data here. Okay, and we can get the output, right? Yeah. जो यहाँ पे इस तरीके से हो रहा था उसको फंक्शंस में डाल के दिखाया. बट यहाँ पे एक चीज़ करना है कि हम लोगों को ये वैल्यू तभी दिखेगा जब हम लोगों को इसका जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हम लोग पर्सन्स का डेटा दिख रहा है, बट हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पर्सन्स का डेटा से मतलब नहीं है. हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए एक दूसरा फॉर लूप लगा रहे हैं, var की इन डेटा. मैंने इन वैल्यू यहाँ पे लगा रहा हूँ. इसमें क्या होगा, एक डेटा को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ एज ए स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे जो पर्सन डेटा होगा उसको एज ए पी मानता हूँ, एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे सेट कर किया. और उसको क्या कर रहा हूँ, पी इक्वल टू, इसको ऐसे करना है, ये है प्लस इंक्रीमेंट, मतलब इसको प्लस इंक्रीमेंट मतलब ये बेसिकली कॉन्केटिनेशन. अभी यहाँ पे ये काम करेगा कॉन्केटिनेशन का, जैसे यहाँ पे ये कॉन्केट हो रहा है वैसे ही ये यहाँ पे काम करेगा. कैसे काम करेगा, पहले यहाँ पे की प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन डाल के यहाँ पे डेटा करके यहाँ पे की डाला जाएगा, जो डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा. उसके बाद यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है उसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे पी के जगह पे मैं इसको आउट नाम देता हूँ तो बेहतर होगा. ये बेसिकली आउट में दिखेगा. तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. थोड़ा सा यहाँ पे नेम दिखा. ओके, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, I totally didn't understand anything. I didn't understand anything now. You did not understand anything now? Because I don't know why there is a function inside the function for loop, then inside the for loop, there's all like mixed looking to me. It have to be separate. Actually, function is separate, for loop is separate. I don't know why it's. Actually, I don't understand. Yeah. What is this actually? Why I am using this? Why I am don't know. why I am using like this?
Just check it. Here I have object and I have the key. Okay, and it is fixed, and when it is fixed, then we can see the output like this way easily. We can see the output easily through this way. Okay, you got understood this particular thing? Yeah. So let's do this way. I will practice the while loop and the loops. Then we'll do tomorrow the object and functions because I didn't understand that. I know the object that you said the cube. It has a key value like name, like your name, location, those things. I understood, but the functions I don't understand. Actually thing is I think. actually this is not a function. It is not a functions part. it is it is actually part of loops. Just function is a wrapper which are represent our data easily. Okay, basically thing is Yeah. in here I just playing here I just am playing two loops into a फंक्शन. बेसिकली थिंग इज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक लूप एक जो एरे है इस एरे के अंदर हम लोग दूसरा कलम देख रहा है. एक एक है बेसिकली एरे मतलब रो, दूसरा है कलम, है ना. बेसिकली क्या है यहाँ पे जो रो है मतलब जो बेसिकली यहाँ पे जो ये है, ठीक है, वो एरे है, ठीक है. बट अगर कलम है मतलब बेसिकली क्या हुआ था यहाँ पे हम लोग बता रहे थे ना कि अगर हम लोगों को ऐसा डेटा दिया जाए var students स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे ये डेटा प्रिंट कर दिया. उसके बाद कोर्स आउटपुट में दिखाना है तो यहाँ पे फुल स्टैक एंड COURS कोर्स JavaScript. ओके, दिस टू कोर्सेस यहाँ पे अटैच किया गया है. तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट किए इसमें क्या हुआ, ओनली इंडेक्स या ओनली इंडेक्स आर अवेलेबल है, ओनली इंडेक्स है अवेलेबल है. एक्स्ट्रा वैल्यू वी आर नॉट सीन इफ वी आर नॉट एडिंग एक्स्ट्रा वैल्यू हियर, राइट. अगर यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम लोग को प्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स्ट्रा वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पे कोर्स ऐड हुआ है ना. अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू जो लगाया गया है इस पर्सनस की जगह पे उसको हम लोगों को दिखाना पड़ेगा. बट ये जो फंक्शंस है when we create these functions can automatically get the key value from the function, and after that visible that value as per key name. So here we can see all the name, and after that we can get the another key value which are already here. Understood? No. Actually It's confusing for me because it's sometimes loops and for loops all together and all again and again. It's making me confused. it is So what I can do is let's do. I will practice the loops today for myself. Then tomorrow we'll do the functions and object again, like or somehow, because I want to share with my skin with you. So I will practice together so I can understand. Otherwise, or you can give me a homework so I can practice. I can see.
if I can do it. I just give you practice by yourself, which I already teach in these sessions. Okay, you teach, you practice all the things as per your own way. Okay, I did not give you any assignment at this moment. Okay, Yeah. because So I will do. Yeah. because I am already in tell about so many things, which is are actually understandable, and it is the way of all the things. So I am not just give you any type of assignment at this moment, because it was some assignment, but you cannot understand this, because जब क्या होता है, हम लोग एक लूप के अंदर दूसरा लूप को चलाते हैं और एक लूप से दूसरा चीज़ों को निकलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मल्टीपल लूप्स को एक साथ में जब हम लोग काम पे लगाते हैं, तब जाके हम लोगों का कुछ चीज़ों को ऐसे बनता है कि जो हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने इसको इसलिए मैंने दिखाया कि ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रोग्रामिंग में, जब हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ, एक ऐसा चीज़ यहाँ पे मैंने सेट किया जहाँ पे जो की है, जो रो है, और रो से तो डेटा निकल रहा है पहले लूप से, फर्स्ट लूप से क्या हो रहा है, एक एक करके हम लोगों को डेटा निकल के आ रहा है। ओके, दिस कॉल्ड सिंगल डायमेंशन एरे, और इट इज़ ए 2 डायमेंशन एरे। मीन्स ये एक डायमेंशन है और ये एक डायमेंशन है। दिस कॉल्ड 2 डायमेंशन एरे, and when it is 2 dimension array, then we can see this kind of loops to present our data. So, but at this moment you cannot understand the process, so for that particular purpose I am not giving you any assignment at this moment, because you so many things need to be understand when you are doing some assignment on loops, array and function. Yeah. So no, I'm asking if you can give me homework like for loops or for loops or for those things. I can solve it and practice it. Actually, And you can give me homework for the for array too, because I understood the loops and array. you That's it. you understood, But if you you understand loops and yes, array, and जो आप अभी समझे हो उसमें बेसिकली वो बेसिक से ही चीज़ है। जैसे ही कुछ काम करने के लिए कुछ दिया जाए ना, तो यही चीज़ मिलेगा, मतलब यही चीज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, मैंने अभी असाइनमेंट नहीं दे सकता, इसके बारे में मुझे और भी बताना पड़ेगा कि एरे का कॉम्बिनेशंस कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एक एरे का कॉम्बिनेशन है, ये एक एरे है जो फिक्स एरे है, उसका आउटपुट मैंने दिखाया। समझ आ रहा है? हेलो? लेकिन I'm saying जैसे ही मैंने इसको एक्स्ट्रा वैल्यूज़ देकर मैं इसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, विदाउट डिक्लेयरिंग लाइक दिस, तब क्या करना पड़ेगा, तब इस तरीके से कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रोसेस के ऊपर ही बहुत सारा काम है। तो इसीलिए लूप, एरे एंड कंडीशंस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के नॉलेज को एनहांस करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आज कुछ टास्क नहीं देगा, जो मैंने so. लास्ट डे में जो भी मैंने कंडीशंस दिखाया था, और जो भी मैंने आज लूप्स और एरे में जो बताया था, उसको एक बार अच्छी तरीके से समझ लिया करो। उसके बाद मैं कल कुछ प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन कराएंगे, जिससे लूप्स एंड लूप्स एरे कंडीशंस ये किस तरीके से काम होता है, और उसका जो लॉजिक बिल्डिंग है इसी के ऊपर बेस करके बनता है। फंक्शंस कुछ नहीं है, फंक्शंस कुछ नहीं है जब तक ये सारा चीज़ मैंने जो सबसे हार्डल चीज़ यही पे शुरू होता है और यहीं पे अटक गए हो। तो अभी मैं क्या चीज़ दे सकता हूँ, प्लस माइनस अगर करना भी है, अगर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना भी है, तो
लूप्स के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करेगा मैथमेटिकल ऑपरेटर, क्या डालेगा लूप्स के अंदर? कुछ हो नहीं सकता। Yeah. So I will practice only today the loops and array. जो मैंने दिखाया उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी को हैंड्स ऑन करके दिमाग में बैठाना है कि क्या क्या है, मैंने उसी को समझ लेना है। क्योंकि जब भी मैंने ये 2 डायमेंशन, मतलब एरे का मतलब ही है डायमेंशन एंड कंडीशन, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली कहते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो जब भी हम लोग एरे से काम करना शुरू करते हैं तो उसमें ही डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का काम आता है। तो ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा कुछ क्लासेस मैं दूंगा जिससे ये अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे ये काम करेगा। तो मैं एक छोटा सा ही एक एग्जांपल्स दिया है, इसको समझने की आप कोशिश करो। ये है एक्चुअली एक थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिकल चीज़, इसको समझने की कोशिश करो। उसके पहले मैंने जो भी चीज़ें बताया उसको फॉलो अप करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप कैसे यूज़ हो रहा है, ऑप कैसे यूज़ हो रहा है, इन कैसे यूज़ हो रहा है, ये अगर पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हो तभी जाके ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा है वो समझ आना शुरू होगा। तो इसीलिए मैंने ये जो चीज़ दिया, यही एक्चुअली अल्टीमेट गोल होगा जब हम लोगों का आउटपुट में कुछ दिखाना चाहते हैं। तो अगर आउटपुट में कुछ Okay. दिखाने का गोल है तो यही होगा उसका अल्टीमेट गोल, जिसके को यूज़ करके हम लोग आउटपुट दिखा सकते हैं। तो अभी कोई टास्क नहीं दे सकते इस कंडीशंस में। Okay. Okay. So I will practice the loops and array. यस एक्चुअली That's what I understood. what But I will try. what I teach you in these sessions, this all the concept you have understanding, remember or practicing, and after that you just understood this particular part by yourself and how it work to crack these things by your own way, because here have the process of data and here is the actual data and here is your output. So you just understood these three things, how it work. No, I don't understand this one. At this moment you cannot understand, but you just read this all the thing and after that you understood it also, then you can understood it. Okay. Okay. I will. I will विदाउट do it. विदाउट Okay. दिस, क्योंकि ये जो भी मैंने चीज़ें सिखाया है ये सारा चीज़ अगर एक समझ में नहीं आता है, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो ये आएगा नहीं। क्योंकि मैंने Yeah, that's the problem. स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को बताया, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को मैंने बताया। Yeah. Okay. So I will do the practice of loops and array. एवरीथिंग I will try to understand. क्योंकि I will यहाँ try पे to मैंने understand the. हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाने के बाद मैंने आखिर में ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिया। दिस इज़ ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। Yeah, ठीक है तो but I don't know the functions, for example, right now. That's the problem. It is not a functions concept. It is a programming concept. It's Just I am using a functions for a single name. Yeah, but still the function is important because I don't know what's function. See, I know its function. It's a get details as a function, right? It's a function, but I don't know what's this one, the parameter or argument. I don't know data. That's what I don't understand too. So what I'm thinking is, let's do one at a time. For example, Okay. array In an next class. object one day, loops another day, like one at a time, so we can have I can understand. Otherwise, it's getting hard for me to understand. Okay. So basically, thing is,
I just simply step by step I uh, give you the so many tasks in our classes, in our class. But here is the some problem, which is the solutions here. And function is not a anything about any fancy keys here. It's just क्या बोलते हैं, we just set the functions, set the codes. Actually these codes are performing in a single word. So function. इट इज़ ए फंक्शन. सो बेसिकली क्या हुआ था, इसमें जो भी हम लोगों को काम करना चाहिए था, जो भी काम है, उस काम को हम लोग एक सिर्फ कीवर्ड में सेट कर दिए. यही है फंक्शन. बेसिकली ये एक्चुअल प्रोग्राम तो यही था. अगर मैं इसको फंक्शन से बाहर निकाल देते तो आउटपुट वही आता था. मतलब बेसिकली मैं इसको यहाँ से निकल के मैं अगर यहाँ पे डाल देता और उसके बाद यहाँ पे ये स्टूडेंट्स लिख देता, तो आउटपुट जो आता, मैं अगर इसको अभी बंद कर देता हूँ, आउटपुट वही सेम चीज़ दिखता यहाँ पे. ठीक है, ये सिर्फ फंक्शंस के बाहर लिख दिया तो ये फंक्शंस नहीं हुआ. अगर मैं ये इसको फंक्शंस में बंद कर देता हूँ तो क्या हुआ, ये क्या काम नहीं करेगा? काम तो सेम ही कर रहा है. इट्स वर्किंग सेम. Yeah, It's working same. It's not a functions part. It's just a coding part, which I'm talking about already. It's not a functions part. Just using yeah. functions for wrapping the code in a single word. Simplified that. I just created simplified. But actually, if you are not using the function, so it is actually your code. Present this So we'll data. start the function. So we'll start the function tomorrow. I will be discuss about the function tomorrow, but it is not a functions part. It is a part of loops, which I Yeah, but when you put inside the function, that's making me confused no. because It is. Don't be confused about this functions syntax. Actually, it is our output. It is our code. Okay. So I just simply comment out this loop, and you can see this loop and this output. It is a output. Where is function? Nothing. yeah. Okay, so I will try to understand. If I do understand, I will let you know. So I will practice it and try to understand. Okay. And if not, Don't be confused yeah, with we'll function. do. It is a practical Okay. part of output when we are using function. But actual program is it is our program, which are actually required to present our data. Okay. So, okay, I will try to understand. I will try to practice the loops, arrays, and Object. let's do one at a time. Like, for example, a loops and array one day, and for example, object and a function another day. So we can separate it so I can understand, because all of them in one day, I think it's hard for me to understand. Uh, okay. Is it good? Okay. In the future. Actually, I tell you everything in one day because I just simply deliver you simple things delivered. यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें दिखाया वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, जो अंडरस्टैंडेबल था. जैसे ही मैंने ये कोड लिख दिया वो अंडरस्टैंड के बाहर चला गया. Yeah, that's true. सो ठीक है, okay. सो इसीलिए मैंने आज कोई भी टास्क नहीं देगा. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, why I am writing this, and every answers have in all this topic which we are already did. Okay, okay. I will try to understand. Yeah, I will try to practice. संडे में छुट्टी होगा. Sunday, yeah. So hold a practice on this topic. Oh, for me, no, Sunday में छुट्टी नहीं है मुझे.
अच्छा मुझे छुट्टी फ्राइडे है, ट्यूसडे है. ओके Yeah, ओके I'm working. ओके Okay, I will try to practice. Yeah, I will practice and then, yeah, I will practice. ओके need ठीक है. practice because without practice you can't understand why I'm using this code. Okay, Okay, so कल मिलते हैं. okay, yeah. बहुत शुक्रिया. Okay.